Racism within our own borders, a painful reality that refuses to fade. In yet another disturbing reminder of the prejudice faced by people from Northeast India, two recent incidents in Delhi and Gorakhpur have sparked outrage across the country. In Gorakhpur, a young doctor from Nagaland posted at AIIMS was allegedly stalked, racially abused and sexually assaulted while returning to campus, leading to multiple arrests. In the national capital, 3 women from Arunachal Pradesh reported being subjected to racist slurs and intimidation by neighbors in South Delhi. The incidents have drawn sharp condemnation from political leaders, including Manipur MP Bimol Akwejam and Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma, who have demanded strict action and long-term safeguards to protect Northeast citizens living outside the region. Today, we ask, why does racial discrimination against fellow Indians continue in 2026? And what concrete steps are being taken to ensure justice and safety? This is our special report, Racism Within Our Borders. People from India's northeast, identifiable by distinct ethnic feature, have for years reported episodes of discrimination, verbal abuse and violence when living, studying or working outside their home states. Civil society groups have repeatedly flagged this as a structural issue tied to prejudice and ignorance in urban Indian societies. Let's start with the most recent incident. AIIMS Gorakhpur racial and sexual assault on a Northeast doctor. A third-year resident doctor from Nagaland posted at AIIMS Gorakhpur was reportedly stalked, racially abused and physically assaulted by 3 men on the evening of 22nd February 2026 while returning to campus. According to police and FIR details, the man followed her on a motorcycle for more than 1.5 kilometers, hurled racial slurs and one allegedly attempted inappropriate physical contact. 3 suspects have now been arrested and sent to jail. According to CCTV and investigative teams aided police identification. The National Federation of Resident Doctors also called the incident a shocking case of racial harassment and sexual assault. This incident has reignited national conversations about the safety of women and Northeast Indians living or either working away from home. जनपद गोरखपुर के थाना एम्स में कल रात्रि यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एम्स में कार्यरत एक महिला डॉक्टर के साथ कुछ मोटरसाइकिल सवार युवकों ने अभद्रता की। इस प्रकरण में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। इसी क्रम में इस घटना में अभियुक्त 2 युवकों को हिरासत में ले लिया गया है तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। Another case in South Delhi, Malviya Nagar, racial abuse of Arunachali women separately. 3 women from Arunachal Pradesh allegedly they were subjected to racist verbal abuse and intimidation by their neighbors in Malviya Nagar, South Delhi. The altercation reportedly began over a minor disagreement about apartment repair work and escalated to use of derogatory racial slurs. One accused has publicly apologized, saying, quoted, "We are ashamed." Delhi police have arrested 1 woman and are investigating the case further. These cases underscore how even everyday disputes can quickly turn into episodes of racial hostility. Political and official reactions, where Conrad K. Sangma, Meghalaya Chief Minister, termed the Gorakhpur assault deeply shameful, urging that such incidents should not just be headline news that fades without action. On the Delhi case, Sangma said discrimination against Northeast people must stop, emphasizing unity and respect in a diverse nation. Bimol Akwejam, Congress MP from Manipur, condemned the Delhi incident, stating that women were subjected to racial stereotypes and derogatory insults, called for strict and exemplary action and pointed out that such occurrences are part of a larger pattern of racist behavior. Union Minister and other leaders, the Union Minister of Development for Northeastern Region, expressed deep concern over the Delhi incident and raised the issue with police and state officials for action. Northeast youth bodies and political wings have demanded quick arrest, rigorous investigations and anti-discrimination measures nationwide. Wider impact and calls for action as well, because these latest incidents
one involving physical and sexual assault and the other rooted in racist harassment, have reignited demands for stronger enforcement of anti-racism and anti-hate laws, mandatory awareness and sensitive training, dedicated grievances mechanism for Northeast people living outside the region, where leaders from political, medical and student communities have all underscored that racial discrimination and assault against any Indian must not be tolerated. Top leaders from Nagaland have strongly condemned the alleged racial and physical assault on a young doctor from the state in Gorakhpur. Chief Minister Nipu Rio termed the attack reprehensible and against the spirit of India's unity in diversity, while Deputy Chief Minister Yantongo Patton described it as part of a deeply troubling pattern of discrimination against people from the Northeast. P. Payawang Konyak also denounced the incident, calling racism and violence against women utterly unacceptable, as calls grow louder for swift, strict and decisive action under the law. First of all, this is unfortunate, but this is not one-off incident. This has been regularly happening, across the country. Especially our young girls and boys are subjected to violence and humiliation of these kinds. It's a larger question of racism and racist, practices in this country. And we have been trying to, often, unfortunately, we have reduced these instances as if these are cases of individual prejudices and isolated events, but it's not. It's a part of a larger structural issues. You should look at Article 15 of the Constitution. Whatever discriminatory forms, there are 5 categories. Our founding fathers have incorporated in that, should be prohibited. One of them is race, that's why BNA sections 196 also gives hints to that one. But we must have an appropriate legislation for the Northeast people in this regard, because this has been happening for decades, and it must be dealt with it systematically. Professor, will there be any thoughts regarding the JNU protest which is happening? I come to know last night because some of the students said that they are boycotting classes and they shut down. So I'll be going and meeting some of them today. Once I get to know the facts, then I'll be able to comment. But I heard that the racist casteist comments have been made. It is unfortunate and it's condemnable if it has been made, but I am not sure. I like to see what actually have said by the Vice Chancellors. Only once I get to know, then I'll be able to give you the detail of that. दिल्ली के मालवीय नगर में नॉर्थ ईस्ट की हमारी बहनों के साथ में कुछ लोगों द्वारा जो दुर्व्यवहार हुआ, ये घटना मेरे संज्ञान में आई। कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने भी अपनी वीडियो में मुझे टैग किया। मैं जल्द उन बहनों से मिलूंगी, पर मैं ये बात कहना चाहती हूँ, इस दिल्ली पे, देश की राजधानी दिल्ली पे हम सब अलग अलग राज्यों से आए हुए लोगों का जितना अधिकार है, उतना ही मेरे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों का भी अधिकार है। आज देश के सीमावर्ती राज्यों से वो लोग दिल्ली में आते हैं, अपना जीवन यापन करने के लिए बड़ी मेहनत के साथ में वो काम करते हैं और दिल्ली को गति देते हैं। कोई भी दुर्व्यवहार उनके साथ बर्दाश्त नहीं होगा। जिन्होंने ऐसा किया उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। मैं ना केवल उन बहनों के साथ में मिलूंगी, बल्कि नॉर्थ ईस्ट के बाकी साथियों के साथ भी मिल करके उनकी समस्याएं भी सुनूंगी और समाधान भी दूंगी। किसी भी तरह की पॉलिसी की जरूरत हुई तो वो भी बनाएंगे। कोई भी समस्या हो या समाधान हो, आप मुझे सीधा डीएम कर सकते। जय हिंद, जय भारत। दिल्ली में अरुणाचल का 3 लड़कियों के साथ में जो हैरेसमेंट हुआ, गाली गलौज किया, उनके साथ बदतमीजी से पेश किया, उसको लेकर के दिल्ली पुलिस ने बहुत सख्ती से कार्रवाई किया है। पहले दिन से हमने दिल्ली पुलिस को भी कहा और मेरे ऑफिस से तीनों लड़कियों को खबर करके बताया गया कि कोई भी प्रॉब्लम है मुझे बताना है। अभी जो औरत और जो लोग ने गाली किया वो अरेस्ट भी हो गया है और अरेस्ट के साथ साथ कोर्ट में पेशी भी हो रहा है और आगे भी कानून के तहत बहुत सख्ती से इसका केस का आगे चलाया जाएगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर में अभी नॉर्थ ईस्ट का लड़का लड़की और नॉर्थ ईस्ट का कोई भी कुछ भी परेशानी होती है या किसी के ओर से जुल्म होता है या वायलेंस होता है, उसका खिलाफ बहुत सख्ती से हम लोग एक्शन लेता है। पहले जैसे नहीं है, हम लोग सिर्फ डिमांड करता है, एक्शन लेना चाहिए करके डिमांड करता है। नॉर्थ ईस्ट के लोग डिमांड करते हैं, चीफ मिनिस्टर लोग, मिनिस्टर, एनजीओ डिमांड करता है। अभी तो मैं खुद बैठा हूं, अभी तो डिमांड का जरूरत नहीं है, हम ही डायरेक्ट एक्शन लेता है। इसलिए हमारा नरेंद्र मोदी जी का सरकार के समय में
नॉर्थ ईस्ट के किसी भी बच्चों के साथ, किसी भी पब्लिक के साथ में कहीं भी, दिल्ली में हो या कहीं भी कुछ घटना होता है तो तुरंत एक्शन होता है। दिल्ली पुलिस तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, यूनियन टेरिटरी है, तो वहां तो एक्शन और तुरंत हो जाता है। 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में, मैं जब होम मिनिस्ट्री में था, नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशल पुलिस सेल भी बनाया है और नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को रिक्रूटमेंट भी किया है और करके अभी नॉर्थ ईस्ट के साथ में कोई भी इनजस्टिस होता है तो कानूनी तहत एक्शन होता है। और देश के अलग अलग स्टेट में भी, दूसरे सिटीज में भी अगर कोई भी नॉर्थ ईस्ट के साथ प्रॉब्लम होता है तो वहां के स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग, मैं खुद परसू करता हूं, फोन करता हूं और पुलिस को बोलता हूं कि एक्शन लेना चाहिए। वो जमाना चला गया जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को मार के फेंक देता था, कोई पूछने वाला नहीं था। पहले के समय में जब हम लोग स्टूडेंट थे, हम जब अपोजिशन में थे, नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ भी इतना जुल्म होता था और कोई सुनने वाला नहीं था। पुलिस स्टेशन जाने से भी पुलिस भी टॉर्चर करते थे, सुनते ही नहीं थे। आजकल तो वो जमाना चला गया। अभी तो मैं खुद बैठा हुआ हूं, इसलिए इतना जल्दी हम लोगों ने वो अरेस्ट भी कर लिया है। मालवीय नगर दिल्ली में जो अरुणाचल 3 लड़की का साथ घटना हुआ, उसके बाद तो हमने पुलिस को बताया कि एक्शन लेकर के हमको जानकारी भी दीजिए, तो पुलिस के ऑफिसर लोगों ने एक्शन लेके अरेस्ट करके और मुझे बताया गया है। और हम लोगों ने अवेयरनेस करने के लिए भी कहा है, एक कमेटी भी बनाया हुआ है दिल्ली में कि अवेयरनेस क्रिएट करना है कि कोई भी नॉर्थ ईस्ट के लोगों का साथ प्रॉब्लम होता है तो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, वहां फोन करना है, खबर करना है, एक्शन तुरंत हो जाएगा। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का ही कहना है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपनाना है। पहले नॉर्थ ईस्ट के लोगों को इग्नोर करता था, आजकल ये कर नहीं सकता है। और पूरा इंडिया एक है, हमारा देश है, क्यों प्रॉब्लम होना चाहिए? ये कल्चरल इग्नोरेंस की वजह से ये जो भाषा यूज करता है नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ, ये ठीक नहीं है। और नॉर्थ ईस्ट में भी हमारा अलग अलग स्टेट से लोग नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, उनका खिलाफ भी हमारे लोग भी गलत बर्ताव नहीं करना है। असम, अरुणाचल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, यहां में भी हम लोग बाहर के लोगों को बड़ा इज्जत देते हैं। आपस में भी हम लोग इज्जत देना है और हमारा नॉर्थ ईस्ट के लोग कहीं भी जाएगा फुल प्रोटेक्शन और फुल इज्जत मिलना चाहिए। तो अवेयरनेस भी क्रिएट करना है, साथ साथ पुलिस कार्रवाई भी, अगर गलती होता है तो सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए। और इस केस में हमने कार्रवाई करके दिखाया है ताकि पता चले कि अगर नॉर्थ ईस्ट के लोगों का साथ गलत बर्ताव करता है, टॉर्चर करता है, तो कानूनी कार्रवाई सख्ती से होगा, ये भी हमने दिखा दिया है। Recent incident that took place in Malviya Nagar against our northeast citizens from Arunachal Pradesh is truly unfortunate, and it is something that is, I should say, unacceptable in today's world. And the kind of the language that was used, the kind of words that were used, and the body language is something that is really, as I said, was very sad, and I must say, very unacceptable. How it was, how the way it was put, and the way the language was used, the way the words were used, is completely unacceptable. And in this point, as a state, as a region, as a country, as we are working towards moving forward together, these kind of statements and this kind of behavior only puts us back, 2 steps. We will realize that in a diverse nation like India, we need to respect each other, and so therefore there is no excuse for that. And that happens, and that is something for us also to understand, that within our society also we need to practice the same thing, and as I say, we need to practice what we preach. So therefore we all have to do it. This has to be a universal thing, where people and citizens, whether it's from the rest of the country or from the northeast region or from wherever it is, without showing respect and without giving dignity to others, there is no way that we'll be able to see our country progressing in the way that we all would like to see. So therefore, I appeal to everyone, that this is not something that we should encourage. In fact, people should speak out. I hope that the local leaders there in Delhi, as well as the different leaders in terms of the community leaders also,
will take serious steps to ensure that this does not happen. And I do encourage that we should have more and more awareness programs in these kind of ways. And especially for the people of Northeast, we need to also speak out about this to support each other. By speaking out, I don't mean you to say bad things about others. Please, that's not what I'm saying. Speaking out only means that you support one another. Speaking out means is that you appeal to others not to do this. Speaking out means you create the awareness to people who may not understand these kind of things that should not happen, because some people really don't understand it, and we've seen this what happened in Malve Nagar. So therefore, this is very, very unacceptable, and I hope that necessary steps and action will be taken. And from our side, whatever we can do to support our sisters from Arunachal Pradesh who face this, we are always there. I'm always there, and as I said, from my side, wherever necessary, we'll take up the matter even at the highest level. Thank you so much. What happened in Malviya Nagar, where women from Arunachal Pradesh allegedly faced racial slurs over a minor dispute? Isn't it so disturbing and unfortunate? Where are we heading towards? As citizens of Bharat, we must remember that our civilization stands on the eternal principle of Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family. Any form of racial abuse, insult or humiliation directed at our sisters from the Northeast is not merely a social wrong. It is a violation of the Constitution of Bharat and an insult to our shared national identity. Women from Arunachal Pradesh or Assam or Manipur, or that matters from any part of northeastern states of Bharat, are equal daughters of Bharat Mata. Discrimination based on physical features or language or region is morally unacceptable and legally punishable offense under our constitutional framework. As a Hindu organization, we from Vishwa Hindu Raksha Parishad, we strongly condemn any language or behavior that demeans the dignity of women. Our Dharma teaches respect. Yatra naryastu pujyante ramante tatra devataha. Where women are honored, divinity resides. To abuse or racially target women contradicts both Sanatana values and Indian law. We urge authorities to ensure a fair investigation and strict action as per law, while also appealing to society to introspect and eradicate prejudice. National unity cannot survive where discrimination is tolerated. Let this incident be a reminder that unity is diversity. Diversity is not a slogan, it's just not a slogan. It is our sacred responsibility.